हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। सो आज की जो हमारी क्लास है ये DSSSB PGT इंग्लिश के अपकमिंग एग्जाम्स के ऊपर फोकस करते हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है इस वाली क्लास के अंदर। एंड जो आपके अलग अलग सेगमेंट्स या कैटेगरीज होते हैं दैट इज लाइक लिटरेचर है, ग्रामर, वोकैबुलरी इज देयर, देन कुछ एक क्वेश्चंस आपके पैसेजेस से आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड इज देयर, राइटिंग एबिलिटी इज देयर। तो मैंने कोशिश करा है कि ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस टचअप हो जाए। आज की क्लास के अंदर कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड जो आपके सेशंस होंगे आई ट्राई टू इंक्लूड small passages as well. So I hope you can hear me properly. Let me know if everything is fine. Okay, good evening everybody. So I'll repeat again. This session focuses on upcoming DSSSB PGT English एग्जाम एंड इसके लिए सीजीएस कोचिंग के ऐप पे आपके पास आपका कोर्स भी अवेलेबल है. सो whoever इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ सीजीएस टीम, जो ऑलरेडी आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप अपने सेशंस के अंदर पढ़ते रहिए, क्लासेस को देखिए, जो स्टडी मटेरियल है रिवाइज करिए एंड डू बेस्ट इन योर अपकमिंग एग्जाम. अगर मान लीजिए किसी वजह से आप नहीं जुड़ पाए हैं सीजीएस के साथ पहले, तो आपके लिए एक ये वीडियो कोर्स या रिकॉर्डेड कोर्स, जैसे आप कहना चाहें, इट्स अवेलेबल सीजीएस कोचिंग ऐप के ऊपर. प्ले स्टोर पे जाइए, सीजीएस कोचिंग डालिए, बड़े आराम से आपको आपका ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए एंड DSSSB सेगमेंट के अंदर सबसे ऊपर ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा. एंड व्हाट ऑल यू विल गेट हियर, आपके सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं, कॉमन पेपर हो या सब्जेक्ट, ऑल सेगमेंट्स, वीडियोज आर देयर, ये आपको सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा. ऑल्सो PDF notes and test series. And if you are focusing on literature part, तो उसमें भी जितने segments हैं, सबसे related classes और study material is available there, right? So moving forward, do check this course. अगर आपने already join नहीं किया हुआ है, please जरूर ये वाले course को check कीजिएगा. क्वेश्चंस पे चलते हैं एंड हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन. देखिए, ट्राई कीजिए इफ यू नो द आंसर और नॉट. हाउ मेनी वाइज मेन और प्रीस्ट्स are mentioned in Eliot's poem Journey of the Magi. So very popular poem by T.S. Eliot. And question के अंदर focus किया जा रहा है that how many people or how many pagan priests or how many wise men are mentioned in the poem. Author T.S. Eliot. And this is your poem's name, Journey of the Magi. So T.S. Eliot, you can remember for T.S. Eliot, birth 1888 and death 1965. And this your poem. This is based on one of the biblical events, which is birth of the Christ. Why these men are traveling? They are going to attend this event of birth of Christ. So answers, yes, 2, 3, 5, only one. So how many segments? Or how many men and priests are mentioned? There are 3 priests or wise men. For question number 1, our right answer is option number B. Now, next question. Question number 2. Change the voice of the given sentence. His hard work satisfied me. This is your sentence. And you need to change the voice. Voice change करना है आपको. Deepa, this is not as per the KVS pattern. This is for DSSSB. So change the voice of the given sentence. I was satisfied for his hard work. I was satisfied in his hard work. I was satisfied with his hard work, and I was satisfied at his hard work. 4 sentences are there and you need to change the voice. कौन सा topic है? This is your grammar and active passive voice. Yes, it's there in the KVS. So if you are preparing for KVS, you can attempt all the grammar-based questions. Okay. So 4 options. I was satisfied for, I was satisfied in, I was satisfied with, or I was satisfied at. We all know we'll go with option number C. Yes, correct answer here is for question number 2, option number C. Next question. Choose the option which is most similar in meaning to the given word. So we are focusing on vocabulary and same meaning word. Synonym or
same meaning. Our word here is magniloquent. Magniloquent. Amusing, humorous, intelligent, or boastful. Four options are there. कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हमें? Amusing, humorous, intelligent, or boastful. So, magniloquent, this word represents something like bombastic language, very high profile and very bombastic. So, which one? Amusing, humorous, intelligent, or boastful? Yes, this will be for boastful. Option number D is your right answer. जी आंसर्स भी करते जाइए एंड प्लीज डू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो उनको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्लास को एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एज वेल ए ट्रैजिक हीरो लाइक जॉन प्रॉक्टर so one of our tragic heroes is created when the protagonist uncovers the source of his downfall. This moment of self-awareness is so. This is the question which is asked here in the given option. Moment of self-awareness. So as per Aristotle आपने पढ़ रखा है there are various terms. एरिस्टोटल ने जब ट्रैजिक हीरो को या ट्रेजेडी को डिफाइन किया था उन्होंने ये कुछ ऑप्शंस दे रखे थे जैसे क्लाइमैक्स है पेरिपीटिया है एनेग्नोरिसिस है हमेशिया है तो आपको इनमें से बताना है विच टर्म इज equivalent for moment of self-awareness. John Proctor is created when the protagonist uncovers the source of his downfall. This moment of self-awareness is climax, peripeteia, anagnorisis, or hamartia. Now this character, John Proctor, you will find this character in The Crucible by Arthur Miller. And this is one of the plays by Arthur Miller. And if you want to remember it, आप इसके लिए डेट भी याद रख सकते हो 1953. Arthur Miller, American playwright है, and in his work The Crucible, you will find your character John Proctor. So कौन सा term? Climax, peripeteia, anagnorisis, or hamartia? Anagnorisis, correct. Right answer here is anagnorisis. What is peripeteia? Anybody? This is reversal of fortune. Reversal of fortune. And what is climax? We all know. आपके play के अंदर जो अलग अलग stages होते हैं, so climax is that stage जहाँ पे सबसे ज़्यादा reader का या जो audience होते हैं उनका attention होता है कि अब क्या होगा kind of thing, right? So वो climax हो गया different stage in a play. Peripeteia is reversal of fortune. Anagnorisis is the moment of self-awareness. जब हमारे tragic hero को पता चलता है कि अच्छा okay this is the reason जिसकी वजह से मेरे circumstances के अंदर ये changes आए हैं. And what is hamartia? Hamartia is the fatal flaw, and this leads to downfall of tragic hero. Hamartia, fatal flaw leading to downfall of tragic hero. ठीक है जी, करेक्ट है, आ रहा है हमें. So right answer is anagnorisis. Now next question number 5. Each country is responsible to keep dash for peace in region. So ये आपका verb और tense based question है. And you have to select your right option जो इस sentence को correct करेगा. So each country is responsible to keep dash for peace in region. Work, works, worked or working. Very easy. आराम से कर ले जाएंगे, नहीं दिक्कत आएगी आपको. Deepa, you are asking about which course? Please specify the course. Practice test for PGT in literature. If you're asking for KVS, we'll start KVS test from tomorrow. So we'll have 4 tests focusing on the 4 books. Class 11th,
textbook, then class 11 supplementary, then class 12 textbook and class 12 supplementary. 4 tests, and then we will have complete mock test as well. So most probably exam is on, if you are like asking for KVS, you have not mentioned there, so I'm just clearing. KVS PGT English exam is on 23rd. So we will focus on 4 individual tests, book test and also 2 mock tests, complete mock tests. ठीक, उस पे करेंगे, पूरा कवर करेंगे, बुक भी और कंप्लीट पैटर्न भी. ओके, फिफ्थ के लिए क्या आंसर लग रहा है हमें? ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन. वर्किंग, to keep working for peace in region. ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6. So we are having lines. Lines. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Now this poem or these lines are written by Emily Dickinson, Kamla Suraya, Elizabeth Barrett Browning, or Christina Rossetti. So, 4 very famous, very popular poetess are mentioned here in the options. Emily Dickinson, Kamla Suraya, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti. और आपको बताना है कि ये lines किसने लिखी हैं. These lines are by Emily, Kamla, Elizabeth, or Christina. Okay, ji. Most welcome. So, right answer for question number 6, Emily. Emily Dickinson. And some basic points याद रख सकते हो आप. Birth 1830, 1886 में death है. And she is American poet. और इनके अपने लाइफ टाइम में, कंप्लीट लाइफ टाइम में, शी यूज टू राइट पोएम्स, लेकिन वो अपने लिए लिखती थी. इट्स नॉट फॉर द लिटरेचर वर्ल्ड की बुक पब्लिश करानी है, मैगजीन के अंदर इंक्लूड कराना है, नहीं. मोस्ट प्रोबेबली 10 पोएम्स और एक लेटर उनकी अपनी पूरी लाइफ में पब्लिश हुआ था. उन्होंने अपने जो डेथ से पहले मेंशन भी करा था अपनी बहन को, दैट मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ये सब मिलेगा, लिटरेचर वर्क मिलेगा, उसको आप डिस्ट्रॉय कर देना. सो काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी सिस्टर ने, लेकिन फिर कुछ एक वर्क्स उनके पब्लिश भी हुए थे. सो मोस्ट ऑफ द पोएम्स आफ्टर बर्थ हैं, बहुत ज़्यादा एडिटेड हैं, देयर इज़ नो टाइटल और एनीथिंग लाइक दैट, नंबर्स हैं. एंड अच्छा है कि all were not destroyed and these gems are among us. So Emily Dickinson, 1830 to 1886, American poet. And this is the line from one of her poems. Next है question number 7. Choose the option which is most similar in meaning to the given word. Vindicate. करना क्या है, synonym या antonym? Synonym. Most similar in the meaning. So vindicate. Argue, destroy, acquit or identify. और अगर मान लीजिए आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है और ये सारे सेगमेंट्स के ऊपर वर्क करना है, दे कैन चेक सीजीएस कोचिंग. आप वहाँ पे आप जाके कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. DSSSB का सेगमेंट हो, KVS हो, यूपी हो, कहीं पे भी आपका TGT PGT इंग्लिश का एग्जाम आता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको वो कोर्स हमारे यहाँ पे मिल जाएगा. राइट, सो डू चेक फॉर योर English literature based courses. Common paper and your subject. So no available है CGS coaching के पे. So most similar meaning, vindicate, argue, destroy, acquit, identify. For question number 7, right answer here is, बताएंगे 7th के लिए. Correct. Yes, acquit. Now next one. Question number 8. Old Possum's Book of Practical Cats is by. So this is a collection of poems, and you can say witty or funny poems. Focusing on cats, and this question is asking this particular book or collection of poem is written by John Galsworthy, Ezra Pound, T.S. Eliot or Matthew Arnold. One of the poems from this collection, McCavity.
is included in your NCRT. It's there, class 8th NCRT, McCavity. So, Old Possum's Book of Practical Cats by John Galsworthy, Ezra Pound, T.S. Eliot, or Matthew Arnold. Whose collection is this? Correct answer, option number C, T.S. Eliot. Next question, question number 9. I am sorry, the house is not available any longer. It dash to be a timber tycoon. And you have to fill this space. Was being sold, will be sold, is sold, has been sold. So I'm sorry, the house is not available any longer. It dash to a timber tycoon. Was being sold, will be sold, is sold, has been sold. So these type of fill in the blanks based questions आपके तीन टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए. One is verb. So आपको verb forms वो सब कुछ अच्छे से आता हो. Then your tenses and also subject verb agreement क्योंकि subject के हिसाब से your word should be there. Subject and verb, they both agree with each other. They should agree with each other, right? So ये तीन topics आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए for such kind of questions. क्या करेंगे? A, B, C या D? For question number 9. It has been sold to a timber tycoon. So D is your right answer. 10th, there are some fruits dash the basket. Which preposition is suitable to fill the blank? So focusing on preposition. Grammar based question और grammar के अंदर कौन से topic पे focus कर रहे हैं हम लोग? Preposition के ऊपर कर रहे हैं. And there are some fruits dash the basket. In, of, to, by. Quite easy one. जरूर आता होगा आपको. ठीक है? Yes, correct है. Option number A, in. There are some fruits in the basket. Correct answer. Next question number 11. Who is the mayor of Casterbridge referred to in Hardy's title? So Thomas Hardy has written this novel Mayor of Casterbridge and the question focuses on the character. So among the given characters, Donald Farfrae, Elizabeth Jane Newson, Michael Henchard, and Lucetta Templeman, which character can be confirmed as Mayor of Casterbridge? Character-based question. So author, Thomas Hardy, novel Mayor of Casterbridge, and you have to select the right character. आपको सही character को यहाँ पे पहचानना है. One thing आप याद रख सकते हो, Mayor of Casterbridge full title is the life and death of a man of character. This is like subtitle of the novel. So आप इसको भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है. And published in the year 1886. And what type of work? Novel and by Thomas Hardy. Thomas Hardy, Victorian novelist, Victorian period. Right answer here is Michael Henchard. He is the mayor of Casterbridge in the novel Mayor of Casterbridge. Okay, option number C. Next, question number 12. Identify the learning style. So teaching methodology or teaching aptitude based question. आपके एग्जाम के अंदर ये भी आता है. There is this one segment which focuses on the teaching aptitude or teaching methodology based questions. देखें क्या पूछा जा रहा है. Identify the learning style. So learner or learning style. Ram is a 7th grader who enjoys listening to audio tapes and lectures. So your hint word, listening, sunta, kya, audio tapes and lectures. He remembers information by hearing. These are all your hint words. Visual learning style, tactile learning style, auditory learning style, or verbal learning style. Among these 4 styles, किस तरीके का उसका learning style है? Ram is a 7th grader who enjoys listening to audio tapes and lectures. He remembers information by hearing.
So listening, hearing, audio tapes, lectures. Option number C. Auditory learning style. So visual, you know, देखना है. Tactile is related with physical. And verbal includes both, right? So option number C. Auditory learning style. For question number 12. Choose the correctly spelled word. Inspector, influence, develop, or influence. 4 words are there. And you have to select the correctly spelled word. So spelling, topic is spellings, right? Spectre, influence, develop, or influence. So correctly spelled word, option number B. Next question, question number 14. Who among the women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? So there is this work. इस वर्क के अंदर जो हमारी राइटर हैं उन्होंने इमेजिन करा एक क्रिएट कैरेक्टर को डेवलप करा having the talent same talent as Shakespeare but she is like defined in a room बिल्कुल वहीं पे packed है एक रूम के अंदर. Now the struggle or the emotion or the feeling she is having wherein she's having that talent but enclosed in room same like the author का भी कुछ उसी तरीके का situation था and same ये हमारे शेक्सपियर सिस्टर इमेजिनरी कैरेक्टर को भी उन्होंने उसी तरीके से प्रेजेंट किया था so who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? So Shakespeare's sister, what is the name? Judith Shakespeare, sister of William Shakespeare, and she is trapped at home. And this situation is mentioned in a room of one's own. And this is one of the essays by, you have to share the answer. So Shakespeare's sister is Judith Shakespeare and situation क्या है trapped at home है किस वर्क के अंदर a room of one's own and ये क्या है this is an essay right and answer here is Virginia Woolf. So this book is by Virginia Woolf wherein she created this character Judith Shakespeare. Question number 14 right answer is Virginia Woolf. Now error-based question. Spot the error. So find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, you will go with the option no error. कि भाई कोई गलती नहीं है. And your sentence is, she has not written the message yet. And these are the options. So no error is given here in option number A. She has पहला वाला segment in option number B. Message yet. Third wala option in option number C and not written the ये वाला option in option number D. So observe carefully. Not go with 1, 2, 3 or 4 इसके साथ नहीं जाइएगा. Go with these options. No error. She has message yet not written the. And your sentence is she has not written the message yet. क्या करेंगे? Error? नहीं है. So this is your no error. Option number A. Sentence is correct. Hemingway's novel A Farewell to Arms is divided into. So Ernest Hemingway and his novel A Farewell to Arms is divided into 2 books, 3 books, 4 books or 5 books. जी आंसर कोशिश कीजिए आ जाएगा आपको थोड़ा सा ध्यान रख करिए याद कीजिए अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवल ए फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 2 books 3 books 4 books 5 books. How many? 5 books or 5 sections.
there. And 1929 publication के लिए आप ईयर याद रख सकते हो, and it is novel and it is by Ernest Hemingway. And 1 point title is taken from, सो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ओके दिस फेयरवेल टू आर्म्स ये टाइटल कहाँ से लिया गया, सो यू विल हैव दिस आंसर. थोड़ा थोड़ा रिलेट करके साइड बाय साइड और इन्फॉर्मेशन भी याद रखिए. सो हाउ मेनी बुक्स और सेक्शंस? 5 books. क्वेश्चन नंबर 17 based on error. Find the part of the given sentence that has an error, and no error होने के केस में you will go with no error. It is a pleasure to meet a cheerful persons. Options are cheerful persons, to meet a, no error, it is a pleasure. क्या लग रहा है? सही है? It is a pleasure to meet a cheerful persons. हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे आंसर्स. और लाइक करा वीडियो को, कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, एंड प्लीज शेयर दी सेशन विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. उनके साथ भी शेयर कीजिए, वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकें. कहाँ पे है? ये रहा. सो इफ इट इज ए, how come it is persons? So we'll go with option number A. It is a pleasure to meet a cheerful person. है ना? Person हो जाएगा. Persons नहीं. All great literature is at bottom a criticism of life. This statement is attributed to. तो ये जो आपका टॉपिक है, this is from literary criticism. एक या दो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, आ सकता है हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म सेगमेंट से. सो ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू आर्नोल्ड, J.S. मिल या फिर जॉन रस्किन. All great literature is at bottom a criticism of life. This is attributed to Matthew Arnold. So Dryden है, Arnold है, Eliot है. These are like big names in your literary criticism segment. जरूर एक बार को रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले. Then 2 more questions. Choose the correctly spelled word. Receive, achieve, beginning, believe. You have to choose the correctly spelled word. Spelling. सही स्पेलिंग बताना है. Receive. So RECEIVE. Receive. Achieve. Beginning. Believe. कौन सा करेक्ट है? Beginning. Right answer is option number C. Correctly spelled word. Now last question number 20. Which of the following are the characteristics of constructivist approach for teaching learning process? So constructivist approach, and here are your options. पहला point है focus is on learning not teaching. So focus is on learning. Second point says students make meaning from their own experience. Students make meaning from their own experience. Third point, class is teacher centered. Third point says class is teacher centered. Now A option कह रहा है 2 and 3 are correct. So ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है. B 1 and 3 focuses on learning and class is teacher centered. 1, 2 and 3 भाई तीनों statements correct हैं. And fourth one says 1 and 2 ये focus वाली बात और own experience वाली बात सही है. So क्या लग रहा है? Constructivist approach. Constructivism पढ़ते हो आप? कौन सा ऑप्शन? Yes, D1. 1 and 2. Class is not teacher centric. This is learner centric. Student centric और learner centric. ठीक है, ये होता है हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म. सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस.
एंड नेक्स्ट क्लास से आई इंक्लूड पैसेज ऑल्सो, ताकि उसके ऊपर भी आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होता चले, कमांड होता चले। इफ देयर एनी फीडबैक और सजेशन कुछ है तो डू कमेंट मी, नीचे क्लास के अंदर नीचे जहाँ पे आपका कमेंट वाला सेक्शन होता है वहाँ पे आप ज़रूर अपने कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ बताइएगा मुझे। आई विल इंक्लूड दैट सेगमेंट इन दिस सेशन। या और कुछ आपको लग रहा है कि हाँ भाई प्रीवियस पेपर कर लें, या उस तरीके से कोई भी एडवाइस देना चाहें, ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करे। स्लोली ग्रेजुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज करेंगे और अलग अलग डोमेन को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय, ध्यान रखिएगा अपना एंड हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत से पढ़िए एंड स्कोर गुड मार्क्स, ठीक। मोस्ट वेलकम नेहा, मोस्ट वेलकम।